beautiful midlife sisters, and welcome back to another powerful episode of Perimenopause, the pause that transforms you. I am your host, Dr. Sulbha Arya, and today we have with us a very, very special guest, Ruchi Bhardwaj Bhara. Ruchi is a fitness and nutrition coach certified by the INFS. She is also the first lady to have been awarded for the excellence in transformative fitness and mentorship by Femina. Ruchi is a former professor in chemistry at NIT at Delhi and Silchar, and she is also currently pursuing her PhD in psychology at the Royal, what was it, Ruchi? Royal? Royal Global University here in Assam. Yeah, the Royal Global University. Ruchi is also a founding member and trustee of Zaspa Trust, which is working for underprivileged children. She has been honored with multiple awards, some of which I have named, and otherwise she has also been awarded the Fitness Coaching Excellence Award and Fitness Icon title. She is passionate about empowering, especially women, to prioritize health, embodying her philosophy of making the extraordinary out of ordinary. So, welcome, Ruchi. We are so happy to have you here on our platform. Thank you, Sulba. Thank you so much for having me here. So, before we begin, Ruchi, I would want to start with unlearning. What are some of the outdated beliefs about exercise or body image that you personally had to empty when you entered in your 40s? Oh, I think it's a concept that I've been talking about again and again. Stop becoming small. Not just physically नहीं, mentally भी, because it has its repercussions. जो हम physically छोटा होने चाहते हैं, less space occupy करना है, I've been saying again and again, please women make your space. You are entitled. ये छोटा होना, पतला होना, ये कहाँ से आया? आप सोचिए वो कॉर्सेट्स जो हमें पहनाए जाते थे पहले, या अभी भी कॉर्सेट्स फिर से वापस आ गए हैं, वो स्लिम वेस्ट, पतला होना, दुबला होना, छोटा होना. Let's not be small. Let's occupy a space. Let's, even if you have to be big, why not? Be healthy and big. Be fit and big. Yeah. Be there. Be seen. That's what is the biggest unlearning I have done for myself, and I am promoting and professing it day and night for women. Build muscle mass. Look good. Look big, and make a Very statement for well. yourself. Yes. So, Ruchi, I believe that again, coming back to this looking smaller, women are into looking smaller. Why I want to look the same as I was in my 20s. So, women always carry that guilt, that shame, and that pressure. And it is, but they don't want to work out for this. They don't want to, they keep on Hmm. procrastinating workouts. They think, कौन जाएगा जिम, so they keep on delaying that. So what emotional baggage do you see in women when they need to release before they start to begin moving consistently? See, सबसे बड़ा emotional baggage I see women is that guilt factor of missing out on things. दे वांट टू डू इट ऑल. वो जो Yeah. मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट, जो कंडीशनिंग है, अगेन इट्स अ सोसाइटल थिंग. इट्स जो भी कहो, पेट्रियार्की है, जो भी कहो, it's there in most of the societies where women are expected, and we have been told that you are born to multitask. Now I feel, as my workload has increased, I realize I cannot multitask. Initially I used to feel that I am missing out on looking after my children as my workload increased. So I started looking for ways, and I started telling women around it, myself, कि it's not necessary कि आपको सब कुछ करना है. आप सब नहीं कर सकते. At one point of time you will break down because there is immense pressure on us to perform. And एक हम, I think we are born also a little differently, not little, very differently from men, कि हमें जो भी करना है सब अच्छे से करना है, परफेक्शनिस्ट होना है, हमें केयर टेकर भी होना है, केयर गिवर है, और उस सब में वी मिस आउट ऑन आवर सेल्व्स. तो ये जो बैगेज है ना ऑफ डूइंग इट ऑल, फीलिंग गिल्टी, चाहे वो मदर गिल्ट हो, चाहे वो होम मेकर का गिल्ट हो, इवन इफ यू डोंट हैव किड्स वी स्टिल कैरी द गिल्ट. अरे मेरा घर साफ नहीं है, अरे मैंने वो काम ठीक से नहीं किया, अरे मैंने खाना ठीक से नहीं बनाया. वाई? आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ फादर्स गिल्ट. हैव यू, सुलभा? No, no, नहीं I सुना? haven't. सोशल Very मीडिया well पे भी put. आज तक एक पोस्ट नहीं आया सेइंग फादर्स गिल्ट इज फॉर रियल. आई मीन व्हाई? क्यों नहीं है? बच्चे तो उनके भी हैं, Hmm. दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो लेट्स ब्रिंग इट फॉरवर्ड कि लेट्स हैव अ टॉक अबाउट फादर गिल्ट, और मे बी दे हैव इट, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, हु नोज, दे हैव देयर ओन प्रेशर्स, राइट?
Yeah, but sharing the burden definitely is one thing Yeah, that, it and it especially reduces the delegating the burden. task, as you say, that we need Yes, to learn yes. to delegate because we Yeah. cannot do it all. No, Yes. we cannot. We cannot. It's high time we realize this. Yeah. So, as a perimenopausal woman yourself, how did you re-meet your body in this phase? What signals did your body start giving you that were different from the, earlier years of your 20s and maybe 30s? So I think सबसे बड़ा सिग्नल तो वही था जो हॉट फ्लशेस आते हैं हमें, sweating, night sweating 3 a.m. especially 3 a.m. you will be just up and sweating and drenched with sweat, चाहे वो it's winter, December, January, and these were the signals. But I think my coping mechanism was much stronger because I had been exercising 5 years prior to that. I started exercising at the age of 36 without even knowing ki how it's going to help me. I just started exercising because there is always this thing, struggle of losing weight and then maintaining it. थोड़ा खाते हैं तो स्ट्रगल वहीं से शुरू हुई कि भाई थोड़ा खाते हैं वेट बढ़ जाता है. और Hmm. हमारे टाइम में ऑल वी न्यू वाज डाइटिंग. I lost all my weight after my both kids were born. But that was all by crash diets कि खा नहीं रहे. तो फिर अब जब 36 37 की हो गई, जब इतना कम खा के भी वेट बढ़ रहा था, then I realized कि there is something missing and I started exercising. And then if you remember Sulba, 10 years back there was this boom of women doing resistance training had just started, weightlifting. So I was very excited and enthusiasm आया मुझे कि चलो let me also get into it कि. And that's how I started with just 1.5 kg dumbbells at home. And karte karte, by the time I was 42, my doctor said, you're hitting an early perimenopause. So, in fact, I was shaken because my periods were all on time and suddenly they were becoming scantier and lesser. And I was fit. I could not understand. But I think this strength training, which I continued, helped me handle this phase of my life very well. This is what I have been telling a lot of women around me that Hmm. हमें 50 का वेट नहीं करना है. We don't have to No, wait no, to no, no. hit Hmm. 50. We should start working 10 years at least before we come Yes, it there hits. so that our body is better prepared and we are ready to take on what's coming for us. मैं तो कहती हूँ टीनेज से लड़कियों को शुरू कर देना चाहिए. इट इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली टू बी Certainly डन, उनको स्ट्रेंथ कर ट्रेनिंग. देना चाहिए बट जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया दिस इज द टाइम दैट दे शुड स्टार्ट Yes, definitely. डूइंग It's इट. never हाँ, too late. I have इट्स नेवर टू I लेट. have mentees as old as 68-year-old Oh, lovely. who's I doing. see some of the posts on Instagram, and I feel so motivated. Women at the age of 65, 70, they are lifting weights. And Yeah. you know what? I go to a gym here locally, so I'll also tell you about a story. So, one of our another very senior officers, his mother comes to the gym. Hmm. And initially, I was like baffled. ये 80 years की आंटी जिम में क्या करी? That was Hmm. my Yeah, yeah. reaction. And Hmm. although, I mean, I know that she was not doing that kind of fitness training, but it Hmm. was Hmm. really wonderful and motivating to see her move at all. She was Yeah. doing all the bench press and everything, and then with Good. light weights. Awesome. And I 80. was like, great. I mean, this is a real motivating factor. This is क्योंकि what उस we टाइम need में to do. ना, हाँ Yeah. या उस टाइम द स्ट्रगल इज नॉट टू make muscles. It's to maintain your Maintain. maintain your muscle mass and your Yeah. bone loss, which is at जस्ट बी feeling फंक्शनल. just to be एट दैट functional. पॉइंट ऑफ Yes, टाइम आप सोचिए, जो मेरे पास सीनियर सिटीजन आते हैं, उनका गोल ये नहीं है कि मसल बिल्डिंग करनी है, पतला होना है. उनका गोल है कि भाई हमें फंक्शनल रखिए, हमारे फंक्शनल जो रहने हमारे एक्स शरीर एंड चलता पेन्स रहे. हैं, हाँ ये नहीं है. हाँ. Yes. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. Yes. या. And especially Hamara, the way the environment is changing, especially in northern India, I feel that every woman, every person, in fact, should, start engaging in some kind of active physical activity so यस. to be able to maintain a better longevity. ट्रू. So, now with this, I come to my next question, Ruchi. How can women learn to listen to energy, the recovery needs, and the hormonal rhythms instead of pushing through the exhaustion that we females are, trained to do? Yeah, it's a very good question. So, जैसे जो 40s, नियरिंग 40s और बियॉन्ड 40s, एक एग्जॉशन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आनी शुरू हो जाती है. इट्स अ फटीग, इट्स अ कांस्टेंट फटीग दैट वी हैव फॉर नो रीजन. विमेन से कि मैं पूरा सोती हूँ फिर भी आई गेट अप टायर्ड. Tired, इट yes. इट हैपेंस विद मी ऑल्सो. खैर मेरा काम भी बहुत रहता है, मैं आई स्लीप लेट, देन माई फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी हाई, कुड बी दैट.
बट देन स्लीप को प्रायोरिटाइज, स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको एटलीस्ट ऐसे 6 to 7 आवर्स मिल जाए तो भी लग्जरी है आज के डेट में। इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू आर वर्किंग, इवन होम मेकर्स को भी वो टाइम नहीं मिलता है कि सुबह सबको रेडी करके भेजना है, एंड सॉरी सॉरी Yeah. एंड सबको रेडी करके भेजना है। देयर इज सो मच दैट गोज ऑन इवन इन अ होम मेकर्स लाइफ, तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। अगर आप वर्कआउट करते हो तो मैं कहती हूँ कि ऐसा वर्कआउट भी नहीं कीजिए कि रेस्ट ऑफ द डे यू आर जस्ट नॉट फंक्शनल, यू आर नॉट एबल टू इवन हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन विद योर फैमिली इवन इफ यू आर एट होम। सो अगर मेरा वर्कआउट बहुत इंटेंस हो जाता है किसी दिन, तो व्हाट आई डू इज दैट आई वुड मे बी डू अ लाइटर वर्कआउट नेक्स्ट डे, or some workout that I find and it's enjoyable for me, not like okay स्ट्रेस के साथ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल हमारे वैसे ही कॉर्टिसोल लेवल्स इतना स्काई हाई रहता है, तो उस पे और हाई करते रहेंगे तो कोई रिकवरी भी नहीं होगी, फैट लॉस भी नहीं होगा, एंड वी आर जस्ट देयर डूम्ड। Yes, people need to understand that कि यस यस अपनी बॉडी के हिसाब से you need to, you know, fluctuate this and prioritize your rest enough so that you are able to maintain your functionality also and without feeling guilty. You And should. that's why Yeah. I, one more thing I like to add here, Sulba, that I do not give HIT to my 40s wala women. Agar there is a woman, like I have been doing HIT and my body is used to enduring that kind of suffering that we go through HIT, it's okay. But most of the women who have not been doing it, they say HIT de do. So I don't give them. I like to give them low to moderate intensity workout for the same reason, ताकि recovery अच्छी हो जाए उनकी। Mm-hmm. रिकवरी नहीं होगी तो फिर वो मसल मास बिल्डिंग तो छोड़िए, वो बचेगा भी नहीं। बचेगा भी नहीं, right. So, as both of us know that emotional fluctuations are very, very real in midlife, how do emotions like anxiety, low mood, or irritability impact the consistency of exercise, as you've seen with your with the people that you work with? या देर आर डेज व्हेन माय मेंटी से कि आज कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मोरल एकदम डाउन है, आई जस्ट देर आर एक्चुअली देर आई हैव मेंटीज हु बीन क्लिनिकली डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड आर ऑन मेडिकेशन फॉर दैट। सो फॉर दैट पर्सन to get out the bed is itself a Challenge. victory. Yeah. Yes, challenge, and if she gets up it's a victory. So मेरा उस दिन गोल ये रहता है कि आप उठ जाओ बस बेड से और बाहर निकल जाओ, गो फॉर अ वॉक, Go यू for टॉक टू समवन या गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि दीज आर द वेज ना वी कनेक्ट डॉट्स टू डॉट्स कि थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, देन उनको थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा, देन शी माइट थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक, ओके आई कैन डू दिस। बट it. देन देर आर डेज सच पीपल इवन cannot get out the bed, and I can really not force them, but yes I tell them be around someone, some family member in that state of mind and situation, so that it's helpful for you. Yeah, it feels So comforting, certainly. And how yes. about you? Like, you also must be having days, when we have a lot of hormonal fluctuations. There are days when we just don't feel like ourselves. We don't feel like doing anything. So, how do you manage those days as in regards to your workouts? So I think I was analyzing because it's very frequently asked question, कैसे करते हो, how you so consistent? Mhm. तो I think मेरा coping mechanism unknowingly बहुत strong बन चुका है। Over the years करते करते coping mechanism के साथ I have made some habits नॉन negotiable, कि सुबह उठती हूँ, जैसे अपना डेली चोर्स करते हैं, मैं पूजा करती ही हूँ, तो दिस वर्कआउट हैज बिकम माई पूजा। Hmm. और जब मेरा काम बढ़ गया आई रियलाइज, अच्छा एक बात और होती थी कि जब तक आप अपने वर्कआउट का एक डेजिग्नेटेड टाइम नहीं रखते हो, आप फिर नहीं करते हो, सोचते अच्छा शाम को कर लूंगी, अच्छा कहीं जाना है छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, जब मैं आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कोच, तो आई हैव कॉल्स द एंटायर डे एंड माई वर्कआउट स्टार्टेड सफरिंग। सो व्हाट आई सेड कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, तो मैंने सुबह आई थिंक 9:30 से अराउंड 12 तक का टाइम ऐसा रख दिया, आई स्टॉप टेकिंग कॉल्स एट दैट टाइम, आई स्टॉप्ड इनवाइटिंग पीपल कि इस टाइम में कोई नहीं आएगा, आई टोल्ड माई हस्बैंड किसी को नहीं बुलाना है, एंड दिस इज माई वर्कआउट टाइम एंड एवरीबडी नोज। सो वो जब अब कभी कभी इवन इफ आई एम टायर्ड ना कि आज मन नहीं कर रहा है, देन आई थिंक यार मैं 10 से 12 करूंगी क्या, कुछ रखा ही नहीं है मैंने। सो Hmm. दैट इज अ स्लॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ टाइम टेबल, अ शेड्यूल। सो अगर प्लानिंग अच्छी होती है ना सुलभा, तो एग्जीक्यूशन इज ईजियर, आई Easier. ऑलवेज से। सो आई टेल माई मेंटीज कि तुम लिख के चाहे टाइम टेबल बना के दो, चाहे वो 30 मिनट्स का ही हो, चाहे ऑल्टरनेट डेज हो, बट फिक्स कर दो, एंड समवन इनवाइट्स यू टेल देम नहीं नहीं इस टाइम तो मेरा वर्कआउट है, आई कांट कम।
जब तक हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना सोच के, तब तक वी विल ऑलवेज कीप मिसिंग आवर वर्कआउट. Yes, certainly this happened with me, and in fact, हम्म. it happens with me a little bit often, quite often, because my workout timings are in the evening. So हम्म. what I started doing is कि मैं जब तक घर पे ये सोचती थी कि कर लूंगी, तब तक समथिंग और दी अदर, इवनिंग्स में कभी कोई आ गया या या कहीं जाना है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू मिस आउट ऑन इज योर वर्कआउट। वही सबसे इजी चीज डेफिनेट. है ओ कि यस. शेड्यूल से हटा दो। या. Then I made it a routine that I have to go to a gym to work out. Yep. अब जब आप घर पे ही नहीं हो तो आप अपने हस्बैंड को, मैं तो घर पे नहीं हूँ, आई कांट कम I टू can't do anything. आई Yeah, कांट I'm डू not home. I can't. एनीथिंग। सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी ऑफ Yeah. कीपिंग अ रूटीन टू stick to. Yeah. So yeah, so what mindset shift helps women to move from I should exercise to I deserve to move for my own well-being? डिजर्विंग अपने आप को बनाइए. जैसे वो एक लॉरियल का है ना कि आई एम वर्थ इट. यस, पर वो कैसे, वो शिफ्ट कैसे लेके आए हैं लोगों की सोच में? बिकॉज women अभी जैसे आई when I talk to my clients, हम्म. a lot of women want to, हम्म. but that day doesn't come. वो रोज it keeps on pushing. How do we convince women that this is not something that you want to, this is something that you यू. should, or that you हाँ. deserved to for your own goodness? एक तो कोशिश हम कर ही रहे हैं यहाँ बातचीत करके. अभी जाएगा सोशल मीडिया पे टू मिडिल एज वुमेन फाइटिंग पेरीमेनोपॉज एंड आई एम तो मेनोपॉज्ड. आई एम गोइंग टू बी 48 इन फेब्रुअरी. सो एक तो हम ही जीता जाता एग्जाम्पल है कि क्या से क्या हो सकते हो आप लोग अगर शुरू कर दोगे. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, आप वो मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन नहीं ले पा रहे हो, आई हैव बीन सेइंग प्लीज टेक गाइडेंस ऑफ सम प्रोफेशनल. They go under the guidance of a mentor. Like you, when you have a disease, you go to a doctor. If you're not able to get that motivation and discipline, you go to a coach, you go to a guide, be with a mentor. Staying with a coach always helps. Yes, certainly. Very well said. This is something that was not there in my mind, but this certainly does help a lot when And you I, have a coach or yeah, a mentor. You, yeah, yeah, it, that really it helps. I've realized it because I myself have been with coaches. I'm still with two coaches, but I'm not with coaches कि मुझे वो motivate करें. I often say that I think मेरा intrinsic drive इतना है. I mean, I feel proud of saying it because there's no one to tell me, and I work out alone. I've been doing it for 10 years now. I'm not them with them for motivation. I'm there to expand my learning and to keep growing. I don't want to become stagnant or okay, I know it all. I want to keep growing and learning and evolving my goals. That's why. So if I am with two coaches, why can't you be the others who are watching us? There's no harm and there's no shame. Oh, certainly there is There's no no shame, shame. There's and no yeah, shame. yeah. And one thing I wanted to point out here that in I'm going to complete 4 years as a coach. I realized that my basics, and I've just been promoted as an elite coach with Fitter. Okay. I realized people still come with the same requirement. We need push. हम consistent नहीं है, हम discipline नहीं है. We want to build consistency. So I realized कि coach का सबसे बड़ा जैसे कहते हैं कि मेरा as a coach मेरा forte is motivation. आई थिंक वही लोग चीज ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कोई ऐसा मिल जाए जो मोटिवेट करे, ऑन ट्रैक रख सके. Yes, certainly. एंड आई थिंक आई हैव डिस्कवर्ड दैट दिस इज माय कॉलिंग टू कीप motivating people. And that's why people have been inviting me and I did not even know when did I become a motivational speaker. They said please come and motivate our staff and so on. So I'm totally enjoying this process because I feel that is the whole purpose of life. Even if you're able to inspire and motivate one person to look forward to life, I think the of life is Your life has achieved. achieved. Certainly, very, very well said, very well put. So, again, it's this question is very similar to the first problem that we addressed. Many midlife women are always chasing the old narrative of, looking smaller or thinner. So, how can strength training help women rewrite their relationship with their body from shrinking to strengthening? देखिए जो बॉडी 20s में थी, अब लेट्स एक्सेप्ट वो तो सेम नहीं रहेगी. ठीक है, वी वी हैव टू एक्सेप्ट देयर विल बी चेंजेस. आवर बॉडी इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ चेंजेस
physically, physiologically, psychologically, we are becoming different. So strength training has definitely is going to impact all the areas of our, livelihood. ऑफ कोर्स मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करता है, रेजिलियंस बढ़ाता है। जब आप वो वेट्स उठाते हो, इट इज़ नॉट लाइक इजी, बट यू आर पुशिंग थ्रू द वेट एंड द पेन, इट बिल्ड्स योर मेंटल रेजिलियंस, राइट? एंड स्ट्रेंथ से जब आप अपने बॉडी में चेंजेस होते हुए देखते हो, बिकॉज यू आर फाइटिंग that unnecessary fat that starts accumulating, right? You have to fight that also. तो shrink मत कीजिए, जो उस एज के appropriate जैसा दिखना है वो होने की कोशिश कीजिए with proper strength training. Focus on building muscle mass. So when I say muscle mass, इट इज़ नॉट दैट कि हम एकदम बल्की हो जाएंगे, वो इतना आसान भी नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड गुड मसल मास। एटलीस्ट जो मसल मास डे टू डे डिप्लीट हो रहा है उसको रोकना है, ये माइंडसेट चेंज करना है। मेरे पास विमेन आती कहती है हमें ना थोड़ा सा थोड़ा सा मसल मास बनाना है, थोड़ा सा मसल मास, थोड़ी सी टोनिंग। सो आई टेल देम थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा कम, ये बंद करो। जो हक की चीज है मांगो, मुझे मसल मास बनाना है तो बनाना है। I have started putting it in their heads and I post all sorts of pictures. मेरी सारी की पिक्चर भी डालती हूँ मैं इसीलिए, और मैं अपने फ्लेक्सिंग पिक्चर्स भी डालती हूँ to show that I'm building muscle mass and I still look like a woman, but this muscle mass is helping me upgrade my metabolism. Yes. नहीं तो वो जो गिर रहा होता और मैं डिप्लीट हो रही होती, और शायद ठीक है अभी तो थोड़ा मेकअप किया है, बट बिना मेकअप के भी आई लुक प्रिटी डिसेंट, कि कि वो रिंकल्स फिर मुझे मतलब ये बोटॉक्स वोटॉक्स नहीं कराना पड़ेगा। मतलब दैट्स द एडवांटेज ऑफ, आई कैन पुट इट इन लेमन्स लैंग्वेज, ऑफ डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Oh, lovely. This is going to be really motivating even for me. व्हाई स्पेंड मनी ऑन बोटॉक्स? Yes. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, सस्ता और टिकाऊ, घर में लाओ डंबल्स 5 kg के, 10 kg के, रेजिस्टेंट बैंड, और हम आपको वर्कआउट प्लान देंगे एंड करिए। इजी है, बहुत इजी है। पीपल Nice. हैवंट एक्सप्लोर्ड, पीपल अभी भी मेरे पास कुछ कुछ आते हैं कहते हैं आई जस्ट हेट टू गो टू द जिम, डोंट आस्क मी टू गेट टू द जिम, गो टू जिम, उसके बिना करा सकती हो रुचि तो कराओ। देयर इज वन पर्टिकुलर फ्रेंड हु ऑफन सेज आई जस्ट हेट जिम, don't talk about gym. I don't know why, but she says. So I'm just waiting for her कि किसी दिन उनको समझ आएगा and she'll join me and then we will start strength training. Basically, I think this is the mindset because as this, most of the women have a similar story. For the longest time, I was always in the mindset of losing weight. And when there was COVID, तो बहुत ज़्यादा कुछ काम था नहीं करने के लिए, so I started going to a gym nearby. And now that has become my lifeline. I enjoy doing the workout so much. And I'm not thinking about, losing weight, gaining muscle mass, or anything when I'm doing that process. It's kind of a meditative process for me. Absolutely, Yeah. So absolutely. that's how I started doing it. And I started enjoying the pain in the process. So Yes. that was really, the next day when I would be sitting in my OPD and my legs would be paining, that used to tell me something, wow, I did something. Yeah, and what you said, lifeline. Yeah. This gym, this workout is our lifeline. ठीक है, जिम मत जाइए, घर में कीजिए। वो ऐसा टाइम होता है डॉक्टर सुलभा व्हेन आई टोटली फॉरगेट दैट आई एम अ वाइफ, आई एम अ मॉम, आई एम अ डॉटर, आई Exactly. जस्ट That's why I said फॉरगेट। meditative state of mind where you are not Meditative, yes. in that zone of being a somebody. You're just, So until unless with people, yourself. you haven't done it, you won't understand what are we talking here. Whoever's listening to us and is not exercising, please start exercising. And you don't have to lift heavy weights, just normal. अरे Start जितना with something that you enjoy. you Do know, anything that you enjoy, आई basically. ऑफन टेल women कि उससे अच्छा तो हमारा बैग होता है हमारे शोल्डर पे, उससे हैवी तो हमारा बैग होता है, वो Right. 5-6 kgs का, जितना डंबल से आप डरते हो एक कंधे पे ऐसे उठा के, बॉडी पोस्चर भी खराब करके हम जो कर रहे होते हैं, या घर में हम सोफा लिफ्ट करते हैं, हाँ, उसके लिए स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? एंड एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग। जब हमारे पास लेडीज आती हैं, ज्यादातर मिडिल एज वुमेन, दे कम विद बैक एक्स, क्रोनिक बैक एक्स। तो वो कहाँ से आ रही हैं? लेकिन जिम से इतनी इंजरी नहीं होती है लोगों को जितनी वो घर से लेके आते हैं, घर के काम में लेके आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर पोस्चर। कुछ भी उठा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, बच्चे को उठा रहे हैं, एंडलेस होम टास्क कर रहे हैं, एंडलेस कर। आई हैव सीन माई मॉम डू इट। आई वुड टेल हर बीच में रेस्ट ले लो, नहीं आई विल फिनिश दिस एंड लाई डाउन, आई विल फिनिश दिस लाई डाउन। तो रीजन अब उसका रिजल्ट है कि क्रोनिक बैक एक्स। सो जिम जाने से
यू आर वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, पोस्चर पे फोकस करते हो, यू नो, कहाँ अर्लियर उसका बिफोर, वेट आएगा, उसका या किस मसल पे आएगा, एब्सोल्युटली, यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट क्योंकि फैक्ट। इंजरी ना हो जाए, हाँ। जिम के नाम से सब सोचते हैं इंजरी हो जाएगी, तो हम्म। वो दे और एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। देयर वाज अ टाइम बिफोर आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, आई वुड वॉक लाइक दिस विद माय shoulders drooping, and my husband would always come and push my shoulders back, and now he does Yes, not need, that is one thing even I have faced, you है know. ना? Yeah. The posture got corrected, and then mindfully I started, looking at it, because it was like when I would be So sitting like like, this. yeah, अंदर, again squeezing ourselves inside, you know, Inside, we, yes, this is what thinking. we were taught कि ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, दिखो मत ज्यादा, ऐसे मत करो, वैसे, अरे I want to occupy my space, I will sit like this. The other day I was telling my daughters, nowadays I walk in a room full of people with my head high and shoulders like this and back straight, and my girls were looking at this, they were feeling so proud of me. So this is what we need to teach people and the young girls out there, na? Yes, and this automatically, starts happening when you are doing strength training. I believe that we start Absolutely. looking at the correct posture formations. Yes. Yes. So, and then a lot of women, as we have been talking about, feel intimidated by when it comes to strength training. And so, what would you suggest for these women not to be afraid of strength training, how to look at it and, get into it? Motivating, how to motivate people to get into strength training, particularly Yeah, females. that's why I think Dr. Sulba, I've been posting almost every day. Sometimes people must be fed up of seeing my post, but that's the whole point. कि छोटे से ही चाहे घर में ही करना शुरू कीजिए, but start. You don't need, a lot of equipment, and of course, as I have been putting a post कि how it's helping your midlife crisis. When you will do strength training, then of course it's going to impact your, it becomes your psychological support, believe it or not, because of the hormones, the happy hormones that are secreted. We talk about endorphins, serotonin, dopamine, exercise is dope, कहते हैं ना, क्यों Yes, कहते हैं? So yes, it helps you stay there, all these hormones, एक अगर आपको happy feel कराता है, एक stabilize कराता है, एक helps you endure whatever is going on in your life, क्योंकि इस टाइम में हमारा वो पेशेंस लेवल भी कम हो जाता है, yes, यू नो। huh, तो yes. ये सब हॉर्मोन्स जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, द इंटरप्ले ऑफ दिस हॉर्मोन्स स्टार्ट्स गेटिंग बेटर, सिक्रीशन अच्छा होता है, एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन योर ओवरऑल वेलबींग. सो दैट्स व्हाई वी से ना दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, स्टेबलाइजर एंड रेगुलेटर बोथ. फॉर मी इट हैज बीन, No, for me, it has been too. for So, both of us, yeah. yeah, because the kind of lives our husbands have, and as busy professionals ourselves, so it is very much required to bring with that chaos, we need to bring that calmness also. नहीं तो हमारे at the end of the day, we won't be productive also in our own professions. Yeah. Yes. Hmm. And so, what nutritional advice would you like to add for females here? How should they go about their nutrition during this phase of life to maintain their energy levels and to be able to, get on with their daily life in a more Hmm. energized Hmm. way? So again, eat right. ना And कम by खाना eating है ना right, ज्यादा. हाँ, नहीं, that's but what I'm, what by yeah, eating I'll right, tell you. what would, yeah. ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, Huh. ठीक है. सो ऑफ कोर्स आई हैव बीन प्रोफेसिंग क्वांटिफिकेशन, क्योंकि आई हैव सीन अमेजिंग डिफरेंस बिकॉज ऑफ क्वांटिफिकेशन, दैट इट मेक्स मी ईट नॉट जस्ट, इट जस्ट डज नॉट हेल्प मी विद अमाउंट ऑफ फूड, बट द राइट काइंड ऑफ फूड, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट जा रहा है. ठीक है, प्रोटीन पे बहुत हाइप है आजकल है ही, और प्रोटीन चाहिए भी, बट उसके साथ सही अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी चाहिए. We all know that. So I, and but for midlife I have been emphasizing acha amount of protein, and two more things are fiber and water intake. Yeah. Most of the times women are not hydrating themselves enough, and fiber तो बिल्कुल ही नहीं, प्रोटीन का तो चलो फिर भी अभी लोगों को समझ आ रहा है, बट आई हैव सीन व्हेन आई गिव देम 500 grams ऑफ वेजिटेबल्स इन द डाइट चार्ट, जैसे ये सब्जी नहीं खाई जा रही है, आप इसे कम करो. मैं कहा वो कम नहीं होगी, वो कम नहीं होगी, आपको खाना है, टेक इट इन द फॉर्म ऑफ सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स, बट गेट इन टू द हैबिट ऑफ ईटिंग. दिस विल कीप योर गट full, distended and healthy, and then you, it sends a signal to your brain, no, that you have eaten enough, Yes, full which feeling of fullness. otherwise we are hungry and always hungry and looking for थोड़ा बहुत munching munching करते करते वही थोड़ा 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 खाते खाते, and समझ नहीं आता है कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं. So eating right
is going to get us there feeling, stable. And वो जो brain fog होता है वो भी नहीं होगा. Oh, Because अगर, hmm. yeah, because वो भी एक characteristic है ना इस phase का important. So, if a woman listening today feels tired and stuck and thinks it's too late, what would you say to her? No, it's not late. It's never late. My senior most mentee was 78-year-old. 78 or 8. insane? 78. Last, she just finished a program. दो वेट लॉस नहीं हुआ, 1 kg कुछ हुआ, बट उस जैसा हमने कहा उस 78 की एज में माय कंसर्न एंड हर कंसर्न वाज नॉट वेट लॉस. लुक एट द एंथुजियाज्म एट द एज ऑफ 78. या Certainly यहाँ very 40, motivating. या तो हम 40 लोगों साल के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करें, कोशिश कर रही. 78 ये 78. है. She started doing little bit of resistance band workout. She would send me her meal pics, can you believe it? And she would say, "Okay, I have taken this." Otherwise, earlier she was not eating enough. Again, she was eating very less. So she started eating well, and she started going to a senior citizen center where she would exercise, spend some time. So देखिए ओवरऑल वेलबींग कितना अच्छा हो रहा है उनका. तो अगर वो उस एज में सोच सकते हैं तो हम 40s वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? इट्स नेवर टू लेट. Never too late. And we do deserve to spend some time on ourselves, on our health. या And या strength training, as you said, is not only for your muscles and your bones, it is also for your good skin. So one should यस. definitely. यस, डेफिनेटली So that डेफिनेटली. is, if not the body, at least do it for your At least face. do it for this. Yeah, yeah. For the aesthetics. For the aesthetics. Yeah, yeah, yeah. Yes, That's a so good thank you. takeaway. Yeah, very good takeaway. At least this will make some people interested in it, because when I do calisthenics, it's all body weight workout and I'm upside down sometimes. So there's a blood rush in my face and I feel it. My skin is glowing post workout. वो जो post workout glow होता है, that's for real, guys. Yes, that's great. Great. And what's your take on Manjaro that a lot of people are taking No, these no, days? no, I no. have a friend, I he started my program and then she was like, वेट तो इससे कम नहीं हो रहा, मैं तो मंजारो पे शिफ्ट होना चाह रही हूँ. So it took me a whole, session to convince her to do hmm. it more holistically. So what's your take on Manjaro injection that I people? am totally against it. Totally against these drugs because आपका अंदर से सब कुछ सिस्टम खराब कर देते हैं. थोड़ा मेहनत कर लो यार. थोड़ा सा मेहनत कर लो. ये ड्रग्स आपको मतलब ड्रग्स भी. एंड आई हैव हैड मेंटीज. She had just joined the program. These are real two cases. Okay, she had joined the program. She could not sustain the program because she was already on Manjaro when she joined me already, and she had so many side effects that she was living in US and she had to come down to India for immediate medical checkup. इतना side effects था. In fact, उनकी permission लेके उन्होंने जो दिया था side effects she was facing, I put it on my Instagram profile. Oh, It's like yeah, it can be disastrous. And another mentee who was with me, she was losing weight and then she stopped kind of her activity and then her weight was not moving. I told her not to take, but she took this Manjaro and she lost 3-4 kgs in first month, and then after that kuch nahi hua. I kept telling her that what we need to focus is on our lifestyle. लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए. हाफ ऑफ द पीपल डोंट फोकस ऑन देयर पोर्शन कंट्रोल और इंक्रीजिंग देयर एक्टिविटी. अगर छोटा छोटा एफर्ट भी ऑन डेली बेसिस थोड़ा भी डालेंगे ना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस. yes, certainly. Because my main goal is to motivate people around this in the year 2026. They should learn to prioritize their health. Things like Yes, Manjaro that they have started, adopting a lot these days. They are short-lived and they come with their own short-lived. baggage. Lifestyle Yeah, stays with you and it certainly helps you in ways that you don't even imagine. yeah, As Ruchi said, your skin, it helps your skin. It also helps with they release happy hormones, which keep your mental state also very good, not only your physical state. So I also want to appeal to a larger crowd that you should adopt these lifestyle, make small shifts at a time, adopt these lifestyles, make it a habit formation in your 2026. And with that, I'll see you in the next episode. Thank you so much, Ruchi, for joining us today. Thank you. thank you, Dr. Sulba. Thank you for having me over.